Hello students, good morning. Today we go through the chapter number 12, that is present tense and now this year. Simple present tense, continuous present, simple present tense, simple present continuous tense, simple present perfect tense and simple present perfect continuous tense. How many tense? Simple present tense, second one is simple present continuous tense, third one is simple present perfect continuous tense, and the last one is simple present perfect tense. Now see here, tenses is used to denote the time of an action. The three main tenses forms are present tense, past tense and future. Present tense means today, that is Friday, and past tense means that the day before, the day yesterday, that is Thursday, and the day will come, that is future tense, means the Saturday is your future tense. Now see, each of tenses mentioned above has four forms. Each tense mentioned above has four forms, which are they? Simple tense, simple present tense, simple present continuous tense, simple present perfect tense, and simple present perfect continuous tense. Now what we have to do in this chapter, that we start continue. First of all, see, simple present tense. In simple present tense, how can you identify that whether the sentence is in simple present tense, present perfect tense, present continuous tense, or present perfect continuous tense? Now see, you have to follow some rules. First one, see, simple present tense, I play. Simple present continuous tense, I am playing. Then simple present perfect tense, I have played. And simple present perfect continuous tense, I have been playing. In simple present tense, there is not even a is, am, are, nothing. But in present continuous tense, you have to follow is, am, are, was, were, has and have. सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, हमारे वर्ब में आईएनजी ऐड होगा. क्या होगा? आईएनजी. सी फर्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन डिफरेंट प्रेजेंट टेंस फॉर्म. स्टेट द टेंस ऑफ ईच अंडरलाइन वर्ब. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. फर्स्ट वन, आई एम प्लेइंग एट द लैंडस्केप. आई के साथ ऑलवेज कौन सा वर्ब आएगा? एम. आई के साथ ऑलवेज क्या आता है? एम. और वर्ब कैसा होना चाहिए? आईएनजी है. अगर कोई भी आईएनजी वाला है, अगर कोई भी वर्ब में हमारे आईएनजी है, तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. क्या होगा वो? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आईएनजी वाले वर्ब क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं. लेकिन उसके साथ क्या है? एम. तो ये क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सेकेंड वन, द ओल्ड मैन इज स्नोरिंग लाउडली, यानी कि ओल्ड मैन जोर जोर से बोल रहा है. अब ये देखो, इज है, इज एम आर, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा? इज एम आर, वॉज, वर, हैव, ये सब हमारे क्या होते हैं? इज एम आर. इसमें टू बी के फॉर्म यूज होते हैं. कौन से फॉर्म होते हैं? टू बी के फॉर्म. अब देखो, इज स्नोरिंग आईएनजी फॉर्म है वर्ब में, तो वो कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. थर्ड वन, ही डज योगा रेगुलरली. सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें इज भी नहीं है, एम भी नहीं है, आर भी नहीं है, वॉज भी नहीं है, वर भी नहीं है, हैव भी नहीं है, हैज़ भी नहीं है. तो ये कौन सा हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस. फोर्थ वन, सी इज ड्रीमिंग ऑफ ट्रैवलिंग इन स्पेस. आईएनजी है तो ये कंटिन्यूस तो होगा, उसके साथ क्या है? इज है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. पीसीटी मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. नेक्स्ट वन, द लेबर्स आर टॉयलिंग हार्ड. द लेबर्स आर, आईएनजी है, आर भी है, तो हमारे कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सिक्स वन, द टॉर्टोइज इज स्लीपिंग. इज भी है, आईएनजी भी है, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. द सिटी वर ए डिजर्टेड लुक, यानी कि सिटी का एक डिफरेंट लुक है. अब इसमें इज एम आर कुछ भी है नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. एट वन, सीता इज लर्निंग पैराग्लाइडिंग दिस डेज. वो क्या सीख रही है? अभी कुछ दिनों से पैराग्लाइडिंग. अब इज है, इज एम आर हो तो हमारा क्या होगा? वो कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो आफ्टर पीसीटी. नेक्स्ट वन, द मैकेनिक हैज़ टायर्ड हिज बेस्ट टू रिपेयर द बाइक बट नो एविल. यानी कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है वो आपको ये अलग पेंडिंग है, तो आगे मैं आपको समझाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट वन, द बेल रिंग्स आफ्टर एवरी पीरियड. इसमें इज भी नहीं है, एम भी नहीं है, आर भी नहीं है, हैज़ नहीं है, हैव नहीं है, कुछ भी नहीं. तो ये कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ सी सम रूल्स. फीचर्स. वर्ब इन सेंटेंस इंडिकेट द टर्म्स, द टाइम ऑफ एक्शन, इंडिकेट द टेंस. द वर्ब हमारा क्या बताता है? टेंस.
द वर्ब फॉर्म चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे वर्ब चेंज होते हैं, उसके फॉर्मेशन चेंज होते हैं। जैसे इज एम आर हम यूज़ करते हैं, वॉज है तो पास्ट टेंस हुआ। दे कैन बी मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन से होते हैं, रीडिंग, प्लेइंग, हमारे जो मेन काम करते हैं उसको बोलते हैं मेन वर्ब। और ऑक्सिलरी जैसे ईट, प्ले, स्लीप, रीड, ये सारे हमारे क्या हुए मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, टू बी के होते हैं और हैव के होते हैं। टू बी में कौन से आते हैं, इज, एम आर, वॉज और वेर। कभी भी कोई पूछे टू बी के वर्ब बोलो तो आपको क्या बोलना है, इज, एम आर, वॉज और वर्ब। एम आपको सब किस कब यूज़ करना है, आई एम ऑलवेज आई के साथ यूज़ होगा। इज़ सिंगुलर सेंटेंस होगा तो हम इज़ यूज़ करेंगे, और सेंटेंस अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर। और वॉज कब यूज़ करेंगे, जब हमारा कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। the verb forms of have can be used as, अब have लिखा हो ब्रैकेट में, अगर आपको टू बी दिया हो ब्रैकेट में तो वो आंसर में बी नहीं लिखना है, इज एम आर का हमें यूज़ करना है। और अगर हैव लिखा हो तो हम उसको हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। हैव किसके साथ यूज़ होता है, यू हैव, आई हैव, दे हैव। बाकी सिंगुलर सेंटेंस में क्या आएगा, हैज़, ही हैज़, सी हैज़। All these verbs help indicate the tense. Now see one example. Ganga is reading a novel. Is क्या हमारा auxiliary verb, reading क्या हुआ main verb. Okay, the verb is reading is in the present continuous tense. Now comes to the next sentence. Sentences may also have multiple auxiliary verb. कुछ सेंटेंस में एक से more than one verb होते हैं, auxiliary verb होते हैं। कौन से देखो, the baby has been playing since afternoon. the baby has तो आपको पता है ये क्या है हमारा auxiliary verb है। been भी हमारा क्या है auxiliary verb। playing क्या है हमारा main verb। the above sentence in the present perfect is in the present perfect continuous tense। जब भी मेन वर्ब हमारे दो हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। विच टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो नाइन्थ नंबर में क्या दिया है, द मैकेनिक हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट टू रिपेयर द बाइक बट नो अवेल। हैज़ है, ये हमारा क्या है, एक वर्ब तो है ही, ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसके साथ हमारा क्या है, मेन वर्ब है, तो वो हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Now come to here, be is often used as an ordinary verb. It is also used to form other tenses. When be is used to form of other tenses is called auxiliary verb. उस verb को हम क्या बोलेंगे, auxiliary verb. Now come here. Sometimes we use short form of be. Be form तुम कुछ short form भी करते हैं, I am, you are. R का क्या होगा, R-E-R. M का क्या होगा, only M. Okay. Now come to the read the table given below to understand use of various forms of be in the present tense. I am, you have to write in short I, comma M. We are, in short you have to write V, comma R-E. You are, you have to write U, comma R-E. She is, you have to write C, comma S. He, comma S. It's, you have to write it, it, comma S. They are, in short you have to write they, comma RE. In this way you have to write short forms also. Now see the another one. The short form of am I not is different, aren't I. Short am I का short form क्या होता है, aren't I is also used. The verb have may be used an ordinary verb or as an auxiliary verb to form other tenses. हैव हमारा वर्ब है, लेकिन वो वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब में भी यूज़ होता है और ऑक्सिलरी वर्ब में भी यूज़ होता है। एक्सप्रेस पोजिशन व्हेन इट इज़ यूज इन ऑर्डिनरी वर्ब। रोहिणी हैज़ ए न्यू मोबाइल फोन। समर्थ हैज़ ए गोल्फ सेट पोजिशन। द वर्ब हैव इज़ ऑल्सो यूज टू मेक टेंसेज। हैव से भी हम टेंसेज बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस बी वाले वर्ब कौन से होते हैं, बी फॉर्म ऑफ वर्ब is, am, are, was, were or has or have. Okay, so in this exercise you have to follow the rules. If the sentence is the subject is singular, you have to use is. If the sentence is in plural form, you have to write or are. If the sentence is singular, you have to use has. If the sentence is in plural form, you have to use have. First one, use the appropriate form of be and have in the following sentences. First one, they dash be playing to watch the match on television. So first of all, our subject is they. They is in plural form, so be will change to are. Second one, I dash be going to the nearby park. Be form of I is am. Third one, Ragini dash not broken this fence. This is a singular subject, so have will change to has. Fourth one, Sushil dash an intelligent boy. Be will change to is because this is a singular subject. Fifth one, they dash be questioning him.
B will change to are because this is the because our subject is in plural form. Sixth one, they dash be in hurry. This is again this is our subject is in plural form, so B will change to are. You dash be talented artist. This is not a singular, this is not a singular or plural identifier, but always you have to for you are you have to use are with you. Eighth one, you dash have contracted your friends it seems. With you you have to use have, not you have to use has. Ninth one, C B going to Simla for a few weeks. B will change to is. I dash have just made a cup of coffee. So have will change to I have will remain same because with I you have to use have. Now see the rules of simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. What you have to do, which are the rules you have to follow in simple present tense. First of all, see the formations. Simple present tense express habitual expense, scientific facts and general truth. To express future event that is part or a fixed program on the table. See, these all are simple present tense. In present continuous tense, is MR plus ing form of the verb. Present perfect tense has have you have to use. Okay. Now see here. The simple present tense is also used in proofs and saying as they refer to permanent truth. So present हमारे टेंसेस में कभी भी परमानेंट साइंटिफिक ट्रूथ है वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ रहते हैं. जैसे हमारे कुछ प्रूफ्स है और कुछ इडियम्स वो कभी चेंज नहीं होते. स्टीच इन टाइम सेव्स नाइन, ये टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, ये सेम रहते, इसको कभी चेंज नहीं किया जाता है. If the sentence is in present simple present tense, at that time you have to use subject plus root form of the verb, or you can add ash or es. You can add ash or es in the sentences also. Okay. Now see the form of present continuous tense. Is mr plus ing form of the verb. If there is a present continuous tense and which what is the rules of is mr plus ing form of the verb. Okay. So now come to the exercise. Fill in the blanks with appropriate verb forms of the bracket. Ganesh dash a good collection of storybook. Ganesh dash a good collection of storybook. Has a good collection of storybook? Yes, because Ganesh is a single boy. Na? We are talking about a one boy, so you have to write here has. The cake dash delicious. This is simple present tense. First of all, you have to identify the tense. This is a simple present tense. The cake tastes delicious. Third one, he dash me luck for my new assignment. ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर है. जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है? ऐड एस ई एस और आई ई एस. वर्ब में हम क्या ऐड करेंगे? एस ई एस और आई ई एस. तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? ई एस, क्योंकि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो ऐड ई और एस, ई एस, आई ई एस हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. नाउ कम टू द फोर्थ वन. मोहन डैश हीज आइडेंटिटी कार्ड एवरी सेकेंड. मोहन एक बॉय की बात करी है और ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंगुलर है तो फॉरगेट का क्या हो जाए? फॉरगेट्स लिखेंगे हम. क्या लिखेंगे? फॉरगेट्स, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. फिफ्थ वन, नमन डैश हीज न्यू क्लासमेट. Naman is a singular subject, so you have to write dislikes. This is a simple present tense and the sentence is in singular subject, so you have to write as es or ies. You can add it. Now see the form of present perfect tense. Present perfect tense का rules क्या होता है? Has, have plus past participle form of the verb. Has, have plus past participle form of the verb. हमें क्या ऐड करना है? हमारे में हैज़ ऐड करेंगे और हैव ऐड करेंगे. उसमें हम क्या लिखेंगे? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. अब देखो कुछ वर्ब मैं आपको बताती हूँ हियर. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. नाउ सी हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्ले विल चेंज टू प्लेज. सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रैक्टिस रिमेंस सेम. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यू हैव टू ऐड इज, एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट वन, डी. She is learning to play the guitar. This is also continuous tense, present continuous tense. So you have to write is learning. Now present perfect tense. Present perfect tense you have to write
has gone, because Gaurav is in singular form, singular subject, so you have to write has. Go will change to gone on an expeditions. Now come to the exercise D. Read the following sentence and fill in the blanks with appropriate form of the verbs given in the bracket. The tense form mentioned along with each sentence. इस एक्सरसाइज में आपको टेंस दिए हुए ब्रैकेट में और वर्ब भी दिए, अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें इसको चेंज करना है. फर्स्ट हमें क्या दिया, दे डैश जॉइन, जॉइन इज योर वर्ब, मी फॉर लंच टुडे. अब क्या बोला, कौन सा टेंस बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमारा फॉर रूल्स क्या है, इज, एम और आर. इज, एम, आर प्लस आई एन जी. तो दे है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हम क्या ऐड करेंगे, आर. दे आर जॉइन वी चेंज टू जॉइनिंग, क्योंकि हमें क्या ऐड करना है, कंटिन्यूस टेंस, तो उसमें क्या ऐड करेंगे हम, आई एन जी. दे आर जॉइनिंग मी फॉर लंच टुडे. सेकेंड वन, बॉयज डैश लव टू फ्लाई काइट्स. बॉयज़ यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सो जब भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो लव विल रिमेन सेम, उसमें वर्ब में कोई चेंजेस हमें नहीं करना है. थर्ड वन, द सन डैश इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सन विल राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. वी हैव टू ऐड ई एस और एस बिकॉज ये सिंगुलर है. फोर्थ वन, द थिएटर फेस्टिवल डैश बिगिन इन द कमिंग वीकेंड. सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब द थिएटर्स फेस्टिवल, तो बिगिन विल चेंज टू बिगिन्स, BEGINS, बिकॉज दिस इज इन सिंगुलर फॉर्म. माई फ्रेंड हैज़ डैश रीडिंग द नॉवल. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा फॉर रूल्स क्या है, हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. हैज़ हैव, अब क्या है हमारा, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर सेंटेंस है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़. माई फ्रेंड हैज़. फिनिश विल चेंज टू फिनिश्ड, FINISHED. हमें इसमें V3 यूज़ करना है. कौन सा टेंस, हम V1 V2 V3 होता है, तो इस केस में क्या यूज़ करेंगे, V3. फिनिश विल चेंज टू फिनिश्ड रीडिंग द नॉवल. सिक्स्थ वन, द सी वेव्स डैश लैश ऑन द सी शोर. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या है, रूल्स इज, एम, आर. तो हम क्या यूज़ करेंगे, द सी वेव्स. वेव्स तो बहुत सारे होते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर. लैशिंग, LSHING. नेक्स्ट वन, सेवंथ वन, आई डैश राइट द लेटर एंड पोस्टेड इट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई के साथ ऑलवेज क्या आएगा, हैव. राइट, रोट, रिटर्न, तो हम क्या लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल V3, WRITTEN, रिटर्न. I have written the letter and posted it. Now come to the exercise E. Rewrite the following sentence directed. The first two sentences have been written for you. Now see the example. According to this example, you have to use these rules. They are meeting today. Make it negative. Okay. They are not meeting today. Make it negative. She is traveling by bus. Make it interrogative. Is she traveling by bus, and put a question mark. So easy. They are leaving for Kolkata soon. Make it interrogative. So you have to make a question form. Are they leaving for Kolkata too soon, and make a question mark. Fourth one, she plays the piano. Make it interrogative, means question form. Does she play the piano? Does she play the piano? When you have to use does, when the subject is singular, at that time you have to use does. Fifth one, she is going out this weekend. Make it negative. She is not going out this weekend. Put a full stop. Sixth one, students are rehearsing for the sports day. Negative. Students are not rehearsing for the sports today. After are or is, you have to write not when the sentence is in negative form. Grandma is knitting a cardigan. Make it interrogative. Is grandma knitting a cardigan, and put a question mark. In this way we completed up to exercise E. Listen the video and write carefully in your notebook. Thank you, students.